So we start from where we left last time. That we introduced the sequential approach and its advantage. One of the theorem in the study of sequences was that a function defined on an interval I is continuous at a point C belonging to the interval I if and only if every sequence that we can visualize in the interval I and that converges to C, then we have limit x approaches n approaches infinity of the image sequence also equal to FC. I think we'll discuss the proof of this and noted down some interesting things about this result. First of all, choice of the sequence in the interval is free as long as the sequence chosen from the interval in the domain approaches C as n approaches infinity. So this is an alternate to the other. जी स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई लाहौर वाला नहीं सर sorry so let me consider this again sequential approach and the advantage of that or the particular use of that sequential approach एक फंक्शन है जो एक इंटरवल आई पे डिफाइन भी है कंटिन्यूस भी है और particularly कोई पॉइंट इंटरवल का आप ले लें सी तो we can have a sequence. Every term of the sequence lies inside the interval I. The characteristic property of such a sequence is that it converges to C, where we are talking about the continuity. Then the limit of the image sequence. This is the sequence in the domain where the function is defined and is continuous. Then the image sequence as n approaches infinity is equal to FC. We know that when we talk about continuity, limit of the function should be same as the value of the function. Now we have been using a left-hand approach and right-hand approach और हम पहले लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ ये चेक करते थे कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम है yes, we can work out left limit and right limit in a majority of the cases, perhaps in almost all cases, but this is this facility that we have a variety that apart from considering left limit or right limit, we can consider a sequence in the neighborhood of the point C in the domain which converges to C, then the corresponding image sequence, that means function values at each term of the sequence in the domain, जिसको मैं image sequence कह रहा हूँ, as n approaches infinity, इस image sequence की limit जो है वो भी वही हो यानी function value हो. So the choice of this sequence in the domain is arbitrary. You can choose any sequence that is a subset of the interval over which the function is continuous. It's free as long as this sequence converges to the point C where we are discussing the continuity of the function. So that gives you infinitely many choices to approach to x is equal to C, not only left hand and right hand. Besides, the terms of the sequence, some of them may be on the left of C, some of them may be on the right of C. Or this can be the case that all the terms are on the left of C, all the terms of the domain sequence is on the right of C. So left-hand limit and right-hand limit is sort of part of this condition, which is a more generalized condition. Now, if f is not continuous at such a point,
अगर कंटिन्यूस होता है तो हम कहते हैं fx minus mod fx minus fc is less than epsilon whenever x is in the neighborhood of point c where we are seeking limit continuity. लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो फिर हमें as x is very close to c, fx will not be close to c. That means mod fx minus fc will be greater than epsilon. Uh, so हम जहाँ जहाँ कंटिन्यूसटी की फेलियर दिखाएंगे वहाँ वहाँ ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. For continuity, we use the sentence where we have mod fx minus fc is less than epsilon. But if we have to demonstrate that the function is not continuous, we can use this expression that mod fx minus fc is greater than epsilon. That means the images of x that are close to c, x values that are close to c, the corresponding images are not close to the function value. That is indicated by this structure fx minus fc to be greater than epsilon. So we can put them in the form of delta chosen as 1 upon n. For very large n, delta will be very small. So Cn may be in the neighborhood of C, but corresponding images Fcn and Fc greater than epsilon. This will be used as an indicator of function not being continuous. I'll come to this from another this we have done. This is the start of the chapter, function of single variable. मैंने इस फाइल को जो पहले सीक्वेंशियल अप्रोच एडवांटेज 1 लिखा था इसको मर्ज कर दिया है एक डिटेल फाइल में जिसमें कि हम ये आर्टिकल कंप्लीट करेंगे. In fact, the chapter will be completed. That is the 5th chapter, discussing this file, the notes in this file that I have shared in the resources as well. I've named this continuity and uniform continuity. So this is the same thing that we discussed or revised again, discussed last time, revised again. And now we go to some important aspects of continuous functions. The theorems that we build here are of very fundamental nature, or you may find out that जितना ज़्यादा एलिमेंट्री रिजल्ट होता है समटाइम्स उतना ही ज़्यादा उसको प्रूफ करना मुश्किल होता है. For example, if you want to prove that 1 is equal to 1, which is very trivial, and we are not yet prepared for proof of such trivial or obvious things. We require more advanced knowledge. So the first of the fundamental results on continuous functions over closed intervals. The theorem says that if a function is continuous in a closed interval, then the function should be bounded over the interval. Now there is a closed interval which is part of the domain, and we know that closed interval is a closed set, and closed set has the characteristic property that it contains each of its limit points. और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल पे तो अब फंक्शन वैल्यूज का जो सेट होगा that will be bounded. That means all fx will be less than some finite real number and greater than some finite real number. That is the boundedness of function.
So if f is defined and continuous on a closed interval, we on contrary assume that f is not bounded, see, not bounded above. हमें प्रूफ ये करना है कि बाउंडेड है, जब बाउंडेड होगा तो बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, लेकिन हम ऑन कॉन्ट्ररी अज्यूम करते हैं कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है या बाउंडेड अबव नहीं है। इसका मतलब है choosing any integer in the closed interval, I can find a point xn and its image is greater than n. That is an indicator of function not being bounded above. That means जैसे जैसे आप larger and larger integers select करते चले जाएं, function values are still larger than that. That is indication of our contrary assumption that function is not bounded. So we consider any sequence in the interval, and this sequence must be bounded because whenever we consider such sequences, they are approaching some point in the interval. So it is, if it is convergent, it is bounded and also has at least one limit point. और हम कहते हैं कि ये limit point जो है वो alpha है. You know that if we forget about a function, just to consider a sequence in the closed interval over which function given is continuous, हम continuity को for the time being consider नहीं कर रहे, एक sequence consider कर रहे हैं that is completely inside this closed interval. So infinite sequence says that means infinite set of points, and Bolzano-Weierstrass theorem says that कि इसकी कम से कम एक limit point होना चाहिए जिसका नाम मैं alpha रख देता हूँ. Also, I is closed set. It contains all its limit points. That alpha चूंकि limit point है इस set of numbers का which we deal as a sequence, तो वो limit point जब ये सारे points inside the interval I हैं, तो alpha which is a limit point in I must be an element of I. Moreover, as alpha is the limit point of the sequence this, therefore there exists a sequence, subsequence, such that as k approaches infinity, the subsequence approaches alpha. अच्छा, ये लफ्ज़ जो subsequence का इस्तेमाल किया गया है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इससे पहले इंट्रोड्यूस किया था या नहीं किया था, ये इस्तेमाल कहीं किया था या नहीं किया था, but this is a tool to make things expressible in more logical way. So just let me talk about a few things as far as subsequence is concerned. So we have on the line a closed interval, and closed interval means A is included, B is included, and suppose there is some point C and sequence points. कौन से sequence के points जो हमने originally consider की है और जिसकी हम कह रहे हैं कि limit point alpha है. So इसकी subsequence होने का मतलब क्या है कि मैं consider करूं एक और सीक्वेंस जिसका कि हर एलिमेंट जो है वो बेसिकली इसी सीक्वेंस का हिस्सा है. So every point of the subsequence is a point in the sequence, but converse is not true. That means some points of the sequence, original sequence taken, are ignored and we make a new sequence. So index की indexing कर दी गई. So इसमें nth term होगी
उन nth टर्म में से कोई kth टर्म होगी, यानी इन n टर्म्स में से जो कि 10, 15, 20, 50 इन्फिनिटी हैं, इनमें से हमने एक इन्फिनिट सबसेट लिया, तो उसकी इंडेक्सिंग जो है वो डबल इंडेक्सिंग कर दी जाती है कि आउट ऑफ दिस ये kth है, यानी आउट ऑफ दिस जो मैं इस सीक्वेंस का हिस्सा बना रहा हूँ उसमें यानी x1, x2, x3, x4 ये सब हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल x4 जो है सब सीक्वेंस का पहला है, x5, x6, x10, और सपोज x10 जो है वो सब सीक्वेंस का दूसरा है. So this is the use of index of index to indicate subsequence. ये sequence भी infinity तक जा रही है. That is n approaches infinity for this sequence. ये जो sequence बन रही है, this is also going to infinity. That means contains infinite number. These sequences are not going to infinity. Their indices are going to infinity. So यहाँ पे अगर इंडेक्स n है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसमें से कोई चौथी टर्म पहली होगी यहाँ पे, कोई 10वीं, कोई आउट ऑफ 10th टर्म ऑफ दिस ओरिजिनल सीक्वेंस विल बी सेकंड टर्म, एंड द नेक्स्ट टर्म इन द सब सीक्वेंस में बी 100th टर्म. तो इसका मतलब है मैं ओरिजिनल सीक्वेंस से सारी सीक्वेंस नहीं ले रहा, सारी टर्म्स नहीं ले रहा, बल्कि कुछ टर्म्स लेके, लेकिन कितनी टर्म्स, ये भी इन्फिनिट है. So this is the concept of, very simple concept of subsequences. So how we use the subsequence here. So ये जो अल्फा है जो कि ओरिजिनल सीक्वेंस जो हमने कंसिडर की थी एज अ सबसेट ऑफ द इंटरवल, उसकी लिमिट पॉइंट अल्फा था. तो as alpha is a limit point of the sequence, therefore there exists a subsequence which also approaches alpha as k approaches infinity. Note that जब आप ये सीक्वेंस किसी पॉइंट अल्फा पे जा रही है, तो ये जो इसका सबसेट है वो भी अल्फा पे ही जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता. So now we consider images under the function f of the elements of the subsequence. So हमने चूंकि on contrary assume किया हुआ है कि function bounded above नहीं है, same result we use for the subsequence कि images under f of every element of the subsequence is greater than the index of the subsequence. वहाँ सीक्वेंस के इंडेक्स से बड़ा था, यहाँ सीक्वेंस सब सीक्वेंस के इंडेक्स से बड़ा है फॉर एवरी के. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं सीक्वेंस सब सीक्वेंस की इमेजेस कंसीडर कर रहा हूँ, दैट मेक्स an infinite sequence in the image set that diverges to infinity. इसका मतलब है there exists a point alpha in this such that the subsequence converges to alpha, but the image of the subsequence does not converges to f alpha. Now, just on contrary, जब हम ये assume कर रहे हैं कि bounded above नहीं है फंक्शन f, तो हमें सब सीक्वेंस की इमेजेस का सेट जो है दैट इज नॉट फाउंड टू बी कन्वर्जिंग टू एफ अल्फा, और इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर ओरिजिनल हाइपोथेसिस दैट एफ इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस. तो व्हेन एफ इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस, हम इस तरह की चीजें अज्यूम करेंगे, सिर्फ फड्डे क्रिएट कर सकते हैं, और फड्डा मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए. So on contrary, we assume something wrong and we reach at something wrong. तो hypothesis fail हो जाता है अगर हम गलत assumption लेके चलें. Hence f must be bounded on I. सिर्फ bounded above proof कर देना काफी है, अगर bounded below proof करना है तो कोई आपको रोक नहीं रहा, ट्राई करें. Now
Uh, the next result of fundamental importance is that अगर function continuous है तो हम ये तो prove कर चुके हैं कि bounded above या bounded below या bounded होगा. अगला result ये है कि the function attains its bounds at least once in the interval. Now, what's the meaning of this? Attaining bounds. I don't know whether you have seen such a result in your earlier calculus courses or not. I consider an arbitrary example. Interval AB, the graph of the function. Continuous here. Now, this point has coordinates A, F, A. This point has coordinates P, F, P. Function is continuous over the bounded interval. So value of the function fx, these are bounded. That means that there is an infimum, there is a supremum, or there is a greatest least upper bound and the greatest lower bound. According to this figure, this seems to be the largest value, or capital M, and this seems to be the smallest value, or small m. हमारी थ्योरम जो इस वक्त हम कंसीडर कर रहे हैं वो ये कह रही है कि पिछली थ्योरम में तो कहा कि if function is continuous over a bounded interval, then the function values must be bounded, must lie between two finite numbers, which is written here. अब जो थ्योरम है वो ये कह रही है कि किसी ना किसी within the interval AB किसी ना किसी पॉइंट C पर मुझे इन्फिमम मिलेगा और किसी न किसी पॉइंट से D पर सुप्रीमम मिलेगा. इनफैक्ट थ्योरम तो ये कह रही है कि the value of the function will be or function will attain its bounds at least once. ये at least का जो शर्त है वो infimum के लिए भी है और supremum के लिए भी है. It is possible that you have a graph. Let me change the color. Where was that change of color? Do I have change of color facility? Yes. So I make another graph. So मैंने ग्राफ ऐसा बनाने की कोशिश की है कि मुझे ऐसा नजर आया कि जो इन्फिमम है वो 2 दफा आ रहा है. सुप्रीमम कोशिश की थी लेकिन वो थोड़ा सा पीछे नीचे रुक गया. तो सुप्रीमम भी 2 दफा आ सकता है. और कोई जरूरी नहीं कि सुप्रीमम और इन्फिमम हो सकता है कि ग्राफ ऐसा हो कि ये इन्फिमम आया, ये सुप्रीमम आया, फिर ये इन्फिमम आया, फिर ये सुप्रीमम आया. और so infimum may be attained by f at multiple values of x in the closed interval. Similarly, the supremum can be attained at multiple values of x in the given closed interval. ये पता नहीं क्यों मैंने कहा कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो क्या होगा. इधर फंक्शन इज कांस्टेंट, हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम है, लिहाजा बाउंडेड है फंक्शन. बाउंडेड तो कंटिन्यूटी की वजह से भी है. कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. K is both the supremum as well as the infimum, and they are attained at every point of AB. So infimum attained at every point, supremum attained at every point, because at every point the function value is same. अगर कांस्टेंट नहीं हो फंक्शन, then being continuous, it is bounded for some alpha and beta in the interval. So for some
alpha in the interval, the function has a value which is infimum of fx for every x in this, and for beta function fp, beta is the supremum of function values. That means greater than or equal to every function value in the interval. यार मैं जरा पंखा खोल लूँ, आके बैठता हूँ तो आजकल खुश्की की वजह से ठंड लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगती है. अच्छा जनाब, हमने कहा फॉर सम alpha beta, we don't know where they are and we don't know whether they are unique or multiple, but हमें थ्योरम में ये प्रूफ करना है, थ्योरम की जो कंक्लूजन है कि बाउंड्स आर अटेन्ड एटलीस्ट वंस इन द इंटरवल, यानी कम से कम एक एक्स वैल्यू के लिए हमें फंक्शन वैल्यू जो है वो इंफिमम के बराबर मिलेगी, और कम से कम एक एक्स वैल्यू के लिए फंक्शन वैल्यू जो है वो सुप्रीमम के बराबर मिलेगी. हमने सुप्रीमम कैपिटल एम लिया, और उसके बाद हम ये अगेन ऑन कॉन्ट्ररी अज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू एम नहीं है. प्रूफ हमने ये करना है कि फंक्शन की वैल्यू किसी न किसी एक्स वैल्यू इन ए बी के लिए सुप्रीमम के बराबर होगी, लेकिन हम ऑन काउंटर अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं. और उसके बाद हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, जी एक्स डिफाइंड एज 1/m माइनस एफ एक्स. हमने कहा कि m है तो सुप्रीमम, लेकिन फंक्शन की कोई फॉर एनी एक्स बिटवीन स्टार्टिंग एट a अप टू b, किसी एक्स के लिए एफ एक्स जो है सुप्रीमम के बराबर नहीं है. दैट मीन्स है तो सुप्रीमम लेकिन बराबर नहीं है. तो m माइनस एफ एक्स, तो m is always greater than fx being supremum. So we see that 1/m minus fx जो नया फंक्शन हम बना रहे हैं वो पॉजिटिव है, उसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है. नया फंक्शन जो बनाया है वो कंटिन्यूस है, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा. तो कांस्टेंट फंक्शन 1 कंटिन्यूस है, m माइनस एफ एक्स कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने कहा है कि ये बराबर नहीं है, लिहाजा जीरो नहीं है. तो हमने वो जो थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर दो फंक्शंस हैं, दोनों कंटिन्यूस हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, उनकी रेशियो भी कंटिन्यूस होगी इन द केस दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो हमारी इस कॉन्ट्ररी एजम्पशन में ये एफ एक्स एम के बराबर नहीं है, लिहाजा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है. जब फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन जी बाउंडेड होगा, प्रीवियस थ्योरम. तो लेट के बी अ पॉजिटिव नंबर. क्योंकि ये पॉजिटिव है, लिहाजा अब मैं जो चॉइस ले रहा हूँ सुप्रीमम ऑफ न्यू फंक्शन की, वो पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ. So gx is less than or equal to k for every x in AB. फिर इस इनइक्वालिटी पर आ जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, एंड आई रीच रिजल्ट व्हाट, कि fx is less than or equal to m minus 1/k. Now when every x value is less than or equal to m minus 1/k, that means m minus 1/k, which is less than m, is an upper bound. And so m is not the supremum of f on the interval AB, and that contradicts my original assumption कि किसी beta belonging to AB or consider supremum m. तो m को हमने assume किया था supremum है, और हमने कहा था किसी x के लिए फंक्शन की वैल्यू m के बराबर नहीं होगी. और इस assumption से हमने एक नया फंक्शन बनाया. उस फंक्शन से जो कुछ हमने डिड्यूस किया वो ये कि m जिसको कि हमने सुप्रीमम कहा हुआ था फंक्शन f का, वो उससे भी छोटा एक अपर बाउंड है, विच इज अ कंट्रडिक्शन. तो m मीन्स
F beta has to be m. That means the supremum must be attained at some point inside the interval AB. Similarly, हम infimum जो है उसके लिए भी ये result prove कर सकते हैं. I leave that for your exercise. Briefly, some functions and their bounds and where these bounds are attained. 1 upon 1 plus mod x. It is a continuing function. It is a bounded function. Now, how it is a bounded function? See that when x is equal to 0, the function has value 1. If x is positive or negative, any other number, this whole thing is less than 1. Now, for that, you need to visualize the graph of this function. ये वाला function. मैंने कहा when x is equal to 0, this function की value 1 है. As x becomes positive or negative, denominator becomes larger than 1 and the overall function value becomes less than 1. तो ये यूँ नीचे आएगा और इस तरह से जाएगा, नीचे आएगा और इस तरह से जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी. So this simple graph shows that supremum is 1, which is attained at x is equal to 0. However, the infimum जो कि 0 है, वो किसी finite value of x पर attain नहीं हो रहा. Similarly, अगर मैं इसका नेगेटिव फंक्शन ले लूँ, तो नेगेटिव फंक्शन का मतलब क्या होगा? अब ग्राफ जो है वो उल्टा हो जाएगा, and it will come like this. It will come like this. In this case, infimum -1 है जो कि 0 पर attain हो रहा है, लेकिन सुप्रीमम जो कि 0 है वो किसी finite value of x के लिए attain नहीं हो रहा. Whereas x square minus 4, x square minus 4. I hope you are familiar with y is equal to x square minus 4, which is a parabola starting at the depth of 4 and going something like this. This point and this point. मेरा ग्राफ -2 से 2 तक है, तो ये -2 0 है और ये +2 0 है. ये जो पार्ट है, this is not part of the graph because हमने interval -2 से 2 दिया है. So where do we are the function attains its infimum? Infimum is attained at this at x equal to 0, and supremum is attained at 2 points. Supremum is 0. Largest value of the function is attained at 2 points. Okay, I hope you get that. And let me close down annotation and proceed further. Yet another fundamental result: if a function f is continuous at an interior point C of AB. इसका मतलब अब मैं जो जिस पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ वो ना A हो सकता है ना B हो सकता है, जबकि पिछली केसेस में हमने जब कहा था कि बाउंड अटेन होंगे इंटरवल इक्वेशन किसी पॉइंट पे, तो उस वक्त हमने A और B को अपनी कंसिडरेशन से बाहर नहीं रखा था, और ये जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें A और B पर इंफिमम अटेन हुए. अब हम इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी का कोई इंटीरियर पॉइंट ले रहे हैं और ये अज्यूम कर रहे हैं कि एट दैट इंटीरियर पॉइंट द फंक्शन वैल्यू इज नॉट 0. पॉजिटिव हो सकती, नेगेटिव हो सकती, 0 नहीं हो सकती. देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव as small as you can think or as small as you need, such that function has the same sign as that of fc for every x in the neighborhood of c. I will keep on demonstrating the purpose of the theorem with geometrical support.
हमारी थ्योरम क्या कह रही है? हमारी थ्योरम ये कह रही है कि एक इंटरवल है क्लोज, इसका कोई इंटीरियर पॉइंट लिया हमने, और इस इंटीरियर पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सी एफ सी यहाँ पे है। थ्योरम ये कह रही है कि अगर ये पॉजिटिव है सी पर, तो देयर विल बी अ नेबरहुड ऑफ सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, that function will have same sign as here. Continuity makes it sure. A possible case of a continuous function may be something like this, or maybe something like this. And you will say that कि भाई इसी नेबरहुड के अंदर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ओह, दैट केस टेक further small neighborhood. So continuity assures that function की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है तो चाहे it quickly goes down to negative values, these points where the function is zero and then becomes negative on both sides, ये बहुत close हो सकते हैं। तो delta is should be only positive. Size क्या है? As small as it. Similarly, अगर fc negative है तो in an interval around c, you can always find an interval around c where the function value remains positive. Uh, so our claim is that a function continuous है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है, और इसका मतलब है एफ सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ सी प्लस एप्सिलॉन। वेरी सिंपल प्रूफ पार्ट ए। सपोज एफ सी इज पॉजिटिव। अगर एफ सी पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन की चॉइस तो आर्बिट्री होती है ना, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एप्सिलॉन इज लेस देन द फंक्शन वैल्यू एट सी। सो एफ सी पॉजिटिव था, उसमें स्मॉल पॉजिटिव ऐड किया, रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। एफ सी पॉजिटिव था, एप्सिलॉन को लेस देन एफ सी कंसिडर कर लिया, तो एफ सी प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट एफ सी माइनस एप्सिलॉन? क्योंकि मैंने एप्सिलॉन को एफ सी से छोटा कंसीडर किया है, लिहाजा एफ सी माइनस एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फंक्शन रिमेन्स पॉजिटिव between two positive numbers for every x in this neighborhood. That means c minus delta से c plus delta tak, all function values are positive. Similarly, if function value is negative, we can prove that function values will remain negative on the basis of this choice of epsilon over the whole interval c minus delta to c plus delta. This seems to be not pretty obvious, but a logical result. कंटिन्यूस फंक्शन है और किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो या तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगी तो कंटिन्यूटी की वजह से वो एकदम से जीरो या नेगेटिव नहीं हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट, एक छोटा इंटरवल होगा जिसमें के फंक्शन विल रिमेन पॉजिटिव, फंक्शन वैल्यूज विल रिमेन पॉजिटिव। अगर फंक्शन की वैल्यू सी पर नेगेटिव है तो एक छोटा सा इंटरवल हमें हमेशा मिल सकता है कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बट दिस इन रिजल्ट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल in the understanding of the concept that we have to explore now. एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, फॉरन बाउंडेडनेस अवेलेबल हो गई, फॉरन ये भी अवेलेबल हो गया कि the bounds are attained at some points x from a to b. अब हमने कहा कि जो एफ ए और एफ बी हैं उनका साइन ऑपोजिट है।
that is FA into FB is negative. Under these conditions, हम कह रहे हैं कि there exists at least one point C inside A and B such that function value will be 0. Now, what does the theorem say? This time, the theorem says this. फर्स्ट कीजिए मैं ए पे नेगेटिव ले लेता हूँ और बी पे पॉजिटिव ले लेता हूँ. दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स एफ ए एफ ए एफ ए. दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स बी एफ बी. Of course, FA is negative and FB is positive. Due to continuity, the simplest continuous graph will be a straight line joining these two. A complicated graph may be something like this. A more complicated graph will be something like this. All continuous graphs will definitely cross x-axis, and whether it is a straight line like this, due to continuity, एक नेगेटिव फंक्शन वैल्यू से पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू जाने के लिए ग्राफ को एक्स एक्सिस क्रॉस करना पड़ेगा. इसका मतलब वहां पर फंक्शन वैल्यू 0 होगी. सो आई कैन से दैट दिस इज अ पॉइंट सी वेयर एफ सी इज 0. अच्छा भाई, आप में से किस किस ने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ लिया है? Has anyone studied numerical analysis up to now? No, sir. This is the fundamental theorem for bisection method of finding roots of an equation, which is stated here as a theorem. And इसके बाद तुम अगर numerical analysis पढ़ोगे तो यकीनन ये चीज़ तुम्हें वहाँ इस्तेमाल करनी होगी and you can easily understand this. अच्छा साहब, हमने कहा कि FA और FB are of opposite sign. In that condition, A और B के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट होगा where function value will be 0. That means the graph of the function crosses x-axis. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि FA पॉजिटिव है, FA नेगेटिव है. Now, अब जरा समझने की बात ये है कि अगर जब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ, ज्योमेट्रिकली तो मैंने बड़ा आराम से दिखा दिया आपको कि कंटिन्यूटी की वजह से उसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है. यहाँ एफ ए ऊपर है, एफ बी नीचे है, तो नीचे आके इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस करना ही करना. लेकिन मैं इसको फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे साबित करूंगा, उसके लिए मैं एक सेट बना रहा हूँ. इस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं? पहली बात तो ये कि ए और बी के बीच में, और दूसरी बात ये है कि इस सेट के एलिमेंट्स वो एक्स वैल्यूज हैं जिन पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है. सो यहाँ फंक्शन वैल्यूज पॉजिटिव है, यहाँ फंक्शन वैल्यूज पॉजिटिव है. हाँ, लेकिन मेरा ग्राफ तो उल्टा है, उससे रिवर्स है. मैंने जो प्रूफ के लिए ग्राफ चूज किया है, that it starts here and goes here. So if I consider a graph of this kind, so यहाँ पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव. So there may be a lot of regions within the interval AB जहाँ फंक्शन वैल्यूज पॉजिटिव है. तो वो तमाम एक्स वैल्यूज जिन पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव हैं उनका सेट है ये. कौन सा? जिसका नाम मैंने रखा एस. नोट दैट एफ ए पॉजिटिव होने का मतलब ये है, ये जो हमने अज्यूम किया है, ये सेट एम्प्टी नहीं है. कम से कम एक पॉइंट जरूर है इसके अंदर, और वो है ए. और अभी हमें ग्राफिकली शो कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी शो, या पिछली थ्योरम में हम शो कर चुके हैं कि अगर एफ ए पॉजिटिव है तो देयर विल बी ए टू ए प्लस डेल्टा
it will remain positive. That means this set contains more points where function is positive. So this set is definitely not empty. Due to order completeness property, ये जो set S हमने लिया है ये x values का set, जिन पर function value positive है. तो order completeness property की वजह से set S का एक supremum होगा, एक largest element होगा इस set में, उसका नाम हम कह रहे थे अल्फा. और अल्फा जो है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और इन बिटवीन भी कहीं हो सकता है. हमने जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की हुई है, अभी जो ग्राफ हमने बनाया था, उसमें द लार्जेस्ट इज एक्स where function values are positive is somewhere here just before this point where function value becomes 0. So there will be a supremum of all x where function values are positive. Is definitely there. Now, as fa is positive, there exists delta, जो मैंने अभी थोड़ी बार कहा कि the function remain positive from a to a plus delta. Now, supremum alpha of s is greater than or equal to a plus delta. Now, what does it mean? Supremum of this set has to be greater than or equal to a plus delta. इससे मैं सिर्फ ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो supremum of this set है, यानी set of all x where function is positive, is not a starting point of the interval नहीं है ये. हालांकि fa पॉजिटिव है और a के फौरन राइट साइड पे मुझे और x वैल्यूज मिलेंगी जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होगा, लिहाजा a जो है वो इस सेट का सुप्रीमम नहीं हो सकता. एक रिजल्ट, let us consider fb to be negative. हमने कहा भाई ये पहले से, इसी ऑब्जर्वेशन काम चल रहा है. अब ऐसा आपको एक नेबरहुड मिलेगा b माइनस डेल्टा से b तक जिसमें फंक्शन वैल्यू नेगेटिव होंगी. जब फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है, ये इन तमाम x वैल्यूज पर फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है ये जो इंटरवल है ये इस सेट का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेट कौन सा x वैल्यूज का सेट है, जिन पे फंक्शन वैल्यूज पॉजिटिव है. जिन पे फंक्शन वैल्यूज नेगेटिव है वो सेट जो है वो s का सबसेट नहीं हो सकता. दिस मीन्स b माइनस डेल्टा इज एन अपर बाउंड ऑफ s. यानी वो रीजन जिसमें x वैल्यूज b माइनस डेल्टा और b के दरमियान है, b इंक्लूडेड, b माइनस डेल्टा में नॉट बी इंक्लूडेड हैं, where do they lie? Where do they lie? Should I look at the figure? Look at the figure. This is b, and I have b minus delta somewhere here. मैंने कहा था कि इस फिगर के हिसाब से इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू 0 है, इसके जस्ट लेफ्ट पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ एक x वैल्यू होगी. या ये पॉइंट जो है दिस इज द सुप्रीमम ऑफ for all values where function values are positive. So this is the supremum of all x where function values are positive, and b minus delta is to the right of that. So b minus delta to the right of that है, इसका मतलब है कि x is less than b minus delta for all x such that तो जो मेरा S सेट है उसका सुप्रीमम M है, लेकिन ये भी उसका अपर बाउंड है. Any number greater than every element of the set is an upper bound. So B minus delta is an upper bound of S, and alpha is less than or equal to B minus delta, and that tells me
कि अल्फा बी के बराबर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस सेट का जो सुप्रीमम कंसीडर किया है अल्फा, वो ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है। फिर इसका मतलब है सुप्रीमम of all x for which function values are positive is neither a nor b। तो क्या है भाई, और इस रिजल्ट का क्या फायदा? Consider f alpha, that means function value at alpha, which is the supremum of all x for which function values are positive, and assume that f alpha is positive. Note that मुझे किसी पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू को जीरो साबित करना है। अल्फा इज अ कैंडिडेट फॉर दैट। Look at the figure. मैंने इस फिगर के हिसाब से जो लिया है सुप्रीमम एम, उसका नाम अल्फा रखा हुआ है। अल्फा इज अ कैंडिडेट फॉर बीइंग द पॉइंट वेयर फंक्शन वैल्यू इज जीरो। अभी तक क्या किया है मैंने? अभी तक मैंने सिर्फ ये साबित किया है कि supremum of all x values where function values are positive is neither A nor B, or now I'm playing further with that कि f alpha को मैंने पॉजिटिव अज्यूम कर दिया। इसका मतलब है there will be an interval where all function values will be positive. Okay, now where the function values are positive, all such x values are elements of S. इस डेल्टा से एक छोटा डेल्टा ले लिया, so that alpha plus delta 2 is within this, or at alpha plus delta 2 function value is positive. This means alpha plus delta 2 is greater than the supremum of alpha, and that means alpha plus delta 2 is contained in S, which is a contradiction, that f alpha must not be positive. If you have any confusion, I repeat this logic. We assume that at alpha, function value is positive. इसका मतलब है एक मेरे पास इंटरवल होगा, अरे यार इसको कलर चेंज करो, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। अगर अल्फा पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने एक थ्योरम कर चुके हैं कि उसके कंटिन्यूटी की वजह से देयर विल बी एन इंटरवल इन विच द फंक्शन वैल्यूज विल पॉजिटिव। तो जब मैंने कहा कि डेल्टा 2 इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट this to be alpha minus delta 2 and this to be alpha plus delta 2। जाहिर है कि अल्फा प्लस डेल्टा 2 जो है वो अल्फा से बड़ा है, और अल्फा प्लस डेल्टा 2 पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है वो एक्स वैल्यूज जिन पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव हैं उनका सुप्रीमियम मैंने अल्फा लिया था, लेकिन अब पता चला था कि अल्फा प्लस डेल्टा 2 पे भी फंक्शन पॉजिटिव है, तो वो अल्फा कैसे सुप्रीमियम हो सकता है? विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि अल्फा एस का सुप्रीमियम है ना। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब मेरी ये अजम्पशन गलत है कि एफ अल्फा पॉजिटिव है, यानी सुप्रीमियम ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज फॉर विच फंक्शन वैल्यू इज पॉजिटिव, उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। Let me close this annotation, and in the next step I consider that f alpha
नेगेटिव है. And then I create a situation in which I reach another contradiction, try to understand that yourself, uh, and we, due to the contradiction created here, under the assumption कि alpha alpha negative होना चाहिए, उस contradiction की वजह से हम कहते हैं कि alpha alpha negative नहीं हो सकता. जब alpha alpha ना negative हो सकता है, ना positive हो सकता है, तो फिर alpha alpha zero ही होगा. Now this is a formal logical way that we prove. Otherwise हमें ये जो कुछ दिखा रहे हैं हम, ये जो कुछ प्रूव कर रहे हैं, वो फिगर से तो नज़र आ ही रहा था कि हमारा जो ये set of all positive set of all x where x is positive, ऐसी तमाम x values जो हैं वो इस पॉइंट के लेफ्ट पे हैं और यही वो अल्फा है, which is the supremum of s. और इस पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, which proves our theorem that whenever fa and fb are of opposite signs, with the ab being a closed interval over which the function is continuous, opposite sign होने की वजह से fa और end point पे फंक्शन की वैल्यू के opposite sign होने की वजह से in between कहीं ना कहीं हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी. That means the graph crosses the x-axis. Geometrical demonstration is very simple, but proving that thing logically is not so simple. We have middle value theorems, mean value theorems, intermediate value theorems everywhere spread in differential calculus and integral calculus, and this is the most fundamental of them. Most fundamental of them in the sense that Rolle's theorem consider करो, Lagrange theorem consider करो, Cauchy mean value theorem consider करो, generalized mean value theorem consider करो, उन सब की बुनियाद यहाँ पड़ रही है. Suppose their function is continuous over some closed interval, fa and fb are not equal, then f attains every value between fa and fb for some x in the interval ab. मैंने एग्जाम्पल एक बना दिया ग्राफ. fa ये है, fb ये हाइट है, इनको प्रोजेक्ट किया y एक्सिस पे. अब fa और fb चूंकि बराबर नहीं है, हाँ, there are function values larger than fb, there are function values smaller than fb, we don't bother about that, but function value at a and function value of b are not equal. उसके बाद जो कुछ कहा जा रहा है कि then f attains every value between fa and fb for some x. fa और fb के दरमियान जितनी y वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक चूज कर लीजिए, फॉर एग्जांपल a. So a as a y value or the image must be an image of at least one point. हमने यहाँ sum कहा है, हम इसको one इस तरह से भी कह सकते हैं, at least at one point this a will be function value for some or at least 1, 2, 3 x between a and b. So let a be a number between fa and fb, we shall prove that there exists c between a and b, leaving out a and b, such that fc is equal to a. It's a simpler proof, and we consider a function wherever we have this facility, the proof becomes simpler. Gx is equal to fx minus a. चूंकि fx कंटिन्यूस है लिहाजा g भी कंटिन्यूस होगा. g कंटिन्यूस होगा तो अब हम जरा ga और gb की वैल्यू निकाल के देखें. ga will be fa minus a and gb will be fb minus a. जरा फिगर के हिसाब से देखें तो fa माइनस ए नेगेटिव होगा, fb माइनस ए पॉजिटिव होगा इस फिगर के हिसाब से. अगर ये मामला उल्टा होता, यानी fa ऊपर होता है fb नीचे होता, तब भी ga और gb दोनों के साइन अपोजिट होते.
किसी भी फंक्शन जो कि कंटिन्यूस ओवर द इंटरवल है, अगर एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज के साइंस ऑपोजिट हैं, तो अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं कि बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। जहाँ फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, दैट मीन्स जी सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एफ सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स एक पॉइंट हमें मिल गया बिटवीन ए एंड बी, between a and b, where function value is a. A was a function value between fa and fb, and not only a is attained at some point c between a and b, but every value, every real number that lies between fa and fb must be image of some x in the interval ab. Continuity इसको ज्योमेट्रिकल शेप से डायरेक्टली हमें दिखा रही है, सेंसिबल बात बता रही है, मगर उसके फॉर्मल प्रूफ जो है वो ये है। Immediately, a corollary to this, that function is continuous over closed interval, then f assumes every value between supremum of the function and infimum of the function. अभी तो हमने कहा था ना एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो उसका सुप्रीमम और इन्फिमम बराबर नहीं होंगे। तो जो बात मैंने एफ ए और एफ बी के हवाले से अभी की, वही बात मैं सुप्रीमम और इन्फिमम के हवाले से कर सकता हूँ। सो आई एम नॉट प्रूविंग दैट, आई हैव जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट कि उसी ग्राफ में ये सुप्रीमम है, ये इन्फिमम है। सो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ विच is continuous over AB is also closed between infimum and the supremum. This is another result, direct consequence of these theorems. Images of closed intervals under a continuous function form a closed interval, closed set. I should have written his closed set. तो मेरे पास अगर ए बी क्लोज सेट है और ए बी क्लोज सेट है, तो इसकी जो इमेज होगी अंडर कंटिन्यूस फंक्शन वो भी क्लोज सेट होगी, दैट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम बिटवीन इन्फिमम एंड सुप्रीमम। ये छोटे छोटे रिजल्ट जो हैं, these are required to be remembered. Now we are entering into an interesting situation and a new term, uniform continuity. We'll see that if a function is uniformly continuous, it is necessarily continuous. But if a function is if a function is continuous, it need not be uniformly continuous. We have to understand the idea what uniform continuity is. फिगर विगर बनाने में बहुत ढीला हूँ, लिहाजा मैंने विकिपीडिया का पेज खोला हुआ था। Let me see I can open that or not. Oh, now can you see this figure? डब्बे जिसमें बने हुए? Can you see this figure? मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब हो Yes, रहा sir. है। ओके, ये जो ग्रीन ग्राफ, ग्रीन पार्ट, देन ब्लैक, देन ग्रीन, देन ब्लैक, ये एक फंक्शन ग्राफ है, राइट? विकिपीडिया से मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का आर्टिकल खोला इसका ज्योमेट्रिकल सेंस दिखाने के लिए। ज्योमेट्रिकल सेंस जो होता है ना, वो इंसान जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आज आपने देखा होगा थ्योरम्स को मैंने जो भी डिस्कस किया, आई tried to complement the description or the message of the theorem with the appropriate figures. विकिपीडिया ने ज्योमेट्रिकल सेंस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे जो आर्टिकल दिया हुआ है, छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन ऐसे ये जो है ज्योमेट्रिकल सेंस दिया हुआ है। You see, this is some point where continuity is being discussed. For every epsilon there is a delta. अब उसने
delta, two delta sides horizontally और two epsilon sides vertically, एक बॉक्स बना दिया। अगर मैं इस पॉइंट पर कंटिन्यूस ले रहा हूं तो ये बॉक्स मेरा वो कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर रहा है जिसके हिसाब से एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। तो डोमेन इंटरवल c minus delta c plus delta, so twice delta की width का बॉक्स, fc minus epsilon fc plus epsilon twice epsilon का बॉक्स। अब मैं एप्सिलॉन जो भी चूज कर रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डिंगली देयर इज अ डेल्टा। इस पॉइंट पे करूं, इस पॉइंट पे करूं, इस पॉइंट पे करूं, इस पॉइंट पे करूं, everywhere I see that with same size of box, the graph enters the box from left side and leaves from the right side. Enters from the left side, leaves from the right side. Enters from the left side, leaves from the right side. Now this is uniform configuration. Oh, मैंने फिगर खोल दी। And when do we say that the function is not uniformly continuous? Now, this function we see that the function from here goes to suddenly to very large values. Do you remember the graph of y is equal to x cubed for positive values? Rises very rapidly. यार ये फिर ऊपर से एकदम concavity change हो गई. So you should think that it is not concavity is not changing. पेन कहाँ गया? पेन ही गायब हो गया. I'm sorry, I'm not able to draw. Cubic graph rises very slowly up to x is equal to 1 and then it rises sharply. So suppose that this is that kind of a graph. Now when the function is not rising sharply, I use the same box with horizontal with 2 delta and vertical with 2 epsilon. The graph enters from left side, leaves from right side. Enters from left side, leaves from the right side. But as and when the graph rises sharply, that same size box, the graph does enter from the left side, but does not leave the box from the right side, it goes upwards. Now the function is not uniformly continuous. I hope you remember that graph. Can anybody think of मेरे ध्यान में कौन सा function है?
जी, I wish you can easily recognize this function. और जैसी मैंने यहाँ x की वैल्यू लिखी, तुम फौरन ये टाइम पहचान का फंक्शन है। टेंजेंट pi/2 minus pi/2. Now, for instance, this graph. मेरा क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस बॉक्स वाली, वो प्रॉपर्टी मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ बॉक्स बनाऊँ तो sorry, the box is not truly rectangular, but the graph enters left side from left side and leave from the right side. But उसी size box अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो I have this kind of situation that graph does enter from the slightly left side but leaves out. और अगर और ऊपर चला जाऊँ तो graph will enter the box from below and from the bottom of the rectangle and will leave out at the top of the rectangle, not left side, right side. And this is not uniformly continuous function. This is the idea behind uniform continuity or now how do we introduce this in formal language? Geometrically तो हमने समझा दी बात. I hope you remember another graph. Anybody remember the graph of sine 1 upon x? When x is very, very large, it goes to positive infinite values. When x is very, very large, negative, it goes to very, very small negative values. What happens inside? When x is very, very small, the 1 upon x are very, very large, and you have sort of waves in between. ज़ाहिर waves यहाँ तक आ रही हैं. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आ रही और इस नोट पैड पे तो ड्राइंग और भी मुश्किल होती है. You may find this kind of graph in elementary calculus books. So ये जो sine waves हैं, when x is very, very small, 1 upon x is very, very large, तो positive, negative, और हम कहते हैं इसकी लिमिट जो है x approaches in of 0 of sine 1 upon x सारे प्लस माइनस 1 के दरमियान रहती हैं, तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट में दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 और greater or equal to 0, because sine values will be between -1 and 0. As you go closer and closer or very, very close to, तो आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है -1 से +1 तक. Now, if I consider this function when x is not 0, and I define it 0 at x is equal to 0, तो ये जो फंक्शन अब मैंने डिफाइन कर दिया say over -a to a, यानी मैंने कोई एक वैल्यू माइनस यहाँ ले ली, कोई एक वैल्यू मैं, अब ये क्लोज इंटरवल है, मैंने बल्कि ये तो बहुत ज्यादती है, ये नहीं लेना चाहिए मुझे लेना चाहिए 0 to a. And I ask the question whether it is continuous or not. तो भाई ये जो वेव्स बन रही हैं टूट कहीं नहीं रही हैं कंटिन्यूस, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि कहीं भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा 2 डेल्टा 2 एप्सिलॉन वाला, ये उठा के मैं यहाँ रखूँ तो ग्राफ विल एंटर फ्रॉम द टॉप and leave from the bottom or vice versa. So this is not uniformly continuous. Continuous है, uniformly continuous. So how we put it all in the formal language?
if f is continuous at x equals c, then our continuity demands this thing. Now, if there is another point d in the interval where f is continuous, then for same epsilon, there is a delta. अगर मैं इंटरवल जो भी कंसिडर कर रहा हूँ, आई कंसिडर किया, उसका पॉइंट सी लूँ, डी लूँ, मुझे एप्सिलॉन डेल्टा मिलते चले जाए. For each point C in I, there is a delta, and delta depends only on the choice of epsilon. Is it the only thing? If it is, then it's all right. But if the delta also depend on the point, you delta, and for every epsilon there is a delta. अगर डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है तो इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर ये जिस पॉइंट पे मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ उस पर भी डिपेंड करता है, ओवर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस, अब सिचुएशन जरा मुख्तलिफ. और ये सिचुएशन मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको, किधर गया वो, यहाँ दिखा चुका हूँ. You choose an epsilon, you have same delta. You choose an epsilon, you can have same delta. You choose an epsilon, and now we see that the delta will, ये जो geometrical property है कि enters from left side but leaves from the top. It means मुझे delta छोटा करना पड़ेगा. इसका मतलब delta depends on C, where I am talking about that the continuity. So delta does depend upon epsilon, but delta also depends on the point where I am seeking the limit. So going back to this. So when I use the formal language, my problem is I say that for every epsilon there is a delta. Now delta depends only on epsilon or some other factors also. That is the question. If delta depends only on the choice of epsilon and not on the point where you are seeking continuity, such delta will work for every point C in I, which we have demonstrated in the figure. Then fx minus fc is less than epsilon whenever this, and in this case we say that the function is uniformly continuous on the interval. और एक चीज और भी बता दूं आपको, अगर मैं इसी ग्राफ को, जिसको मैंने कहा ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, इंटरवल यहाँ से यहाँ तक रखने के बजाय इंटरवल में यहाँ से सिर्फ यहाँ तक रखूं, फिर तो लार्जर इंटरवल पे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर स्मॉलर इंटरवल ले लूं तो फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. So we are today talking about continuity over an interval, over closed interval in fact. तो वो इंटरवल पे ये इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. Let me elaborate more with using a figure. How many of you recognize this graph? कौन से फंक्शन का ग्राफ है? जी, anybody who recognizes the function whose graph मैंने roughly बनाने की कोशिश की है? हेलो हेलो, हुमा, मुस्तफा, उजैर,
जी, कौन से फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है मैंने? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। अबे नहीं यार, ई पावर एक्स का ग्राफ तो यूं जाता है। दिस इज 1/x। अगर मैं इंटरवल ए बी यहाँ पे लूँ, यानी ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करूँ, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इंटरवल में 0 से लेके फॉर एग्जांपल 1 तक करूँ, so here is the region where the problem is, where y suddenly goes very very large as you go close to 0. So इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। wherever it is uniformly continuous, it is continuous. 0 से 1 I can't take this, ये क्लोज इंटरवल है, इस पर ये लेफ्ट साइड पे कंटिन्यूस नहीं है, but in this interval the function is not uniformly continuous as well. So हम uniform continuity इस interval पे discuss करते हैं. So it also depends on the interval on which we are working, that differentiate function being only uniformly continuous, only continuous or uniformly continuous. Continuous होना एक प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी है। अगर ग्राफ तेजी से राइज हो रहा है वहां कंटिन्यूस तो है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। जहां यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है वहां डेफिनेटली कंटिन्यूस है, लेकिन जहां सिर्फ कंटिन्यूस है वहां यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना जरूरी है। If f is uniformly continuous over an interval, then delta depends on the choice of epsilon and not the point where we are seeking continuity. Thus, if delta depends both on epsilon and c, the function is not uniformly continuous. ये सेंटेंसेस बार बार मुख्तलिफ शक्ल में इसलिए लिखे हैं कि जब हम प्रॉब्लम वर्कआउट करते हैं तो ज्योमेट्रिकली इस्टेब्लिश करना इट्स ऑल राइट, बट फॉर्मल लैंग्वेज में बाज़ वक़्त प्रॉब्लम्स करते वक्त हमें देखना होता है कि what tool we should use. So the tool is provided by this definition. A function f defined on an interval I is said to be uniformly continuous on the interval if for every epsilon positive there exists delta positive such that इस इंटरवल के कोई दो पॉइंट्स ले लो x1 और x2, then the difference of y values will remain small. That means मेरा जो बॉक्स आइडिया था वो हर जगह पूरे इंटरवल की हर x वैल्यू, कोई भी दो x वैल्यू ले लो उस पर चलेगा ये, for which of course x1 and x2 are close together, y1 and y2 are close together. अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा तो what should fail out of this sentence? Geometrically we have seen that वो ग्राफ्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं थे जहां y की वेरिएशन बहुत ज्यादा थी. That means if I choose two close values of x, the corresponding y values will not be close together and they may be far apart as y rises rapidly, and that function will not be uniformly continuous. And then we prove that the function which is continuous on a closed interval is also uniformly continuous over the interval. एक जाहिर है पूछूंगा तो मैं जो दो तीन लोग मौजूद है उन्हीं से पूछूंगा।
Can someone shed light on why people are not coming to the live session? I can see only थोड़ा Huma. लंबा सेशन होता है। यार बात सुनो, मैं भी तो बैठा होता हूँ। जी सर, हम इसीलिए बैठे हैं। अब चूंकि आप लोगों को, हाँ आप तीन चार नाम ऐसे हैं जो रेगुलरली बैठे होते हैं। अगर ये फैसिलिटी है कि भाई आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, तो पता नहीं मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, बस दिल बाज़ औक़ात खराब हो जाता है। क्योंकि आप मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर नॉट वेरी सिंपल थिंग्स, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। रीड एनालिसिस जो है, ये पहला कोर्स आता है स्टडी ऑफ मेजर मैथमेटिक्स, जो मुझे याद पड़ता है हमारा, हम जब ये कोर्स कर रहे थे, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर डॉक्टर नाजिम हुसैन जैदी, अल्लाह गनी रहमत करे, हमारे चेयरमैन होते थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी के। तो जब हम क्लास अटेंड करके बाहर निकलते थे, तो हमारा एक दोस्त साथी क्लास फेलो, वो कहता था कि जैदी साहब की इस कोर्स क्लास अटेंड करके बाहर निकलो तो वो वाली कैफियत होती है कि अगर किसी बच्चे को हाथ पकड़ के घुमाते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं और उसके बाद बच्चे को छोड़ें तो बच्चा का सर चकरा रहा होता है, तो वही हालत होती है हमारी जब हम जैदी साहब की करियर एनालिसिस का कोर्स की क्लास अटेंड करके निकलते हैं। तो वो तो ज़माना और था, हम टीचर से सवाल पूछते हुए बहुत घबराते थे, हालांकि मैं तो पूछ लेता था, आमतौर पर लोग नहीं पूछते थे। और आप लोगों को मैंने कभी रोका नहीं है, जिस वक्त चाहें आप सवाल पूछ सकते हैं। और मेरे लिए ये चीज़ हजम करना ज़रा मुश्किल है कि सिर्फ लेक्चर सुन के मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को बहुत आसान बनाने की, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। और इंटरेक्शन फिजिकल अगर क्लास हो रही होती तो जाहिर है कि आपको फिर अटेंड करना होता, तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग, और ख़ास तौर पे चूँकि हम यहाँ वीडियो ऑफ कर देते हैं डेटा बचाने के लिए, अपना ज़्यादा ज़ाती वाईफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके चेहरे के, और अगर मैं वीडियो खोल भी दूँ सारे चेहरे तो नज़र नहीं आते, और नज़र आते भी हैं तो जो सामने बैठे हुए चेहरों के तासुरात होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है वो जा रहा है मैसेज या नहीं जा रहा। से एनीवेज, वो जब मेरे जहन में इस तरह की कोई बातें आती हैं तो एकदम से दिल उचाट सा हो जाता है। ओह, क्वाइट जोन में क्यों बैठी हो? You should be somewhere. You can. सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। नहीं, हुमा का मैसेज आया कि मैं लाइब्रेरी में हूँ क्वाइट जोन, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, तो अब लेक्चर सुन रही है, सवाल नहीं कर पा रही। एनीवेज, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आज का सेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और with the message of all those who are listening to this lecture and my lectures in general, कि यार अगर आप लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करें और क्रॉस क्वेश्चन करें तो एक एडवांटेज होगा आपको। वो आजकल वो होता है ना, मतलब आई नेवर डू मार्केटिंग ऑफ माय कोर्सेज, आई नेवर bother about whether
somebody जब फ्री होती थी ना कि भाई स्टूडेंट को कैन ऑप्ट फॉर एनी टीचर, जब भी मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। अगर मेरी क्लास क्लास में कम स्टूडेंट आए तो मैं खुश होता था, लेकिन अल्लाह का पता नहीं फजल था या जो भी था, मेरे सेक्शन हमेशा भरे रहते थे। अब तो फोर्स होती है, फिक्स होती है रजिस्ट्रेशन, तब तो मसला ही नहीं है। लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। और वो मोटिवेशन ये है कि अगर आप पार्टिसिपेट करें लाइव सेशन में और आप पॉज क्वेश्चन करें, तो यू कैन डिक्रीज माय स्पीड ऑफ डिलीवरिंग कंटेंट, दैट may हेल्प यू कि कोर्स कंटेंट कम से कम हो। मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस करनी शुरू की। अब मैं डिस्कस किए जा रहा हूँ अपनी तरफ से, चीज़ों को आसान बना के आपकी समझ में भी आ रहा है, चलिए मान लिया। लेकिन अगर आप एकदम ऐसे ही सवाल पूछ लें कि सर ये डेल्टा एक्स नीचे जो जीरो जा रहा है इससे ये नहीं हो जाएगा, और मैं कहूँगा ओ या क्या क्या अच्छा सवाल पूछा, अच्छा मैं उसमें डिस्कस करना शुरू कर दूँ। सो इन दैट वे देयर विल बी सम टाइम gone. I'll not call wasted. Some time will be gone, and the content of the lecture, in terms of number of topics and examples, will reduce, which will ultimately reduce the total content of the course out of which you will be examined. तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरह पंगा कर रहे हो मुझे, आई डोंट माइंड एनी पंगा। हाँ, कभी कभी पता चल जाता है कि वो ऐसी तंग करने के लिए सवाल किया जा रहा है, तो उस सूरत में मैं भी फिर तंग करता हूँ। लेकिन अगर मैं तंग करूँगा तो उसमें और भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आइए पार्टिसिपेट कीजिए, सवाल पूछिए, ताकि मैं जैसे मैंने आई हैड टू कवर 10 पेजेस, मैं 7वें पेज पे रुक रहा हूँ, लेकिन आने वाले कुछ पेजेस बहुत क्विकली गुजर जाएंगे। तो ये मेरी, इट्स नॉट माई मार्केटिंग, इट्स जस्ट माई ऑफर कि आए सवाल पूछें। और सवाल जब लाइव सेशन नहीं होगा, जब आप रिकॉर्डेड सेशन अटेंड कर रहे होंगे, तब भी आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे। और मेरा तजर्बा जो है कि व्हाट्सएप पे क्वेरी आए और मैं उसका जवाब दूँ। हाँ, ये वो पिछली दफा हुआ था ना कि वो एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, उसमें a+a-b होल स्क्वायर सही तरह नहीं खुला था, तो उसका मैंने फौरन वो एक पिक लेके एक कागज पे सॉल्व करके मैंने शेयर कर दिया था। एंड एनीवेज, तो मेरी ऑफर है कि आप लोग क्लास में आए, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करके मुझे कम से कम पढ़ाने में मजबूर करें। एन ओपन ऑफर। नाउ आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। अपना ख्याल